So welcome Abhimanyu, uh, one of the most promising cricketers on the block right now. India, he has played for India 23. Currently, he is playing for India A and one of the very consistent players for Bengal. He is all but 28, Mm. but has a stunning average of 48, around 48, with close to 7,000 runs. So you are definitely one talent, and it's just about time we'll see you soon playing for India. So welcome to the show, Abhimanyu. Thank you so much. Yes. So अभिमन्यु बताइए आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई लाइक हाउ डिड ऑल दिस बिगन इन योर लाइफ क्रिकेट. I think cricket was in my family. My father loved cricket, and as a kid, I also loved cricket a lot. We watched a lot of cricket together, and I mean, he used to play for his CA's team and also for a club called Toon Club. So I used to go watch their games. I really enjoyed being around them and playing cricket. I used to help them with fielding. So then dad saw my interest, and finally I started coaching, and that's how it all began. So what was your first, who was your first coach, who was your first academy, what was it? My first coach was Mr. Junaid Anjum. He is from Dehradun only. And my first academy would be Abhimanyu Cricket Academy only. My dad had Your dad. started that academy long back, but he didn't know that I would also be so interested in cricket. So I also started practicing there only. So at what age did you start it? I'm not sure. I think I began when I was seven, maybe Yeah. 7 or 8. 7, I guess. So your dad was a cricketer himself, and obviously that was in your Yeah. blood. Yes, he was really passionate about the game, but unfortunately, he couldn't afford the game, so he had Yeah. to leave it and do something else. He's a chartered accountant by profession, but Correct. I'm lucky enough to have the same passion and profession. अभिमन्यु, सबसे पहला ऐसा कौन सा ब्रेक थ्रू मोमेंट था आपके कैरियर में व्हेन यू फेल्ट लाइक या आई मेड फॉर द बिग थिंग्स. First breakthrough moment would be when I made my Ranji Trophy debut for Bengal. I felt it was really special because I'd left home at the age of 10, and then to be representing Bengal in first class cricket at the age of 18 was really special for me, a really good moment for me and my family. That is when I felt that if I can reach here, I've worked hard for this, I can go a step ahead. And that made me more motivated and pushed me to become a better player every day. अभिमन्यु, I mean, you are relatively still young, and your Yeah, first class records are definitely very nice, like close to yeah, 7,000 runs in Ranji Trophy. yeah. So what is that Yeah. one thing you consistently do, or what are those certain things which you never forget to do, which makes your game, better and better? I feel it's about preparation for me, be it physical, mental, or with the fitness part. I am somebody who works a lot on my preparation. I feel the more prepared I am, that gives me the best chance to perform for my team. Whatever team I play for, my goal is to win that game or tournament for my team. So I try and make sure I am the best prepared player on the field. I want to be really fit. I want to be tactically ahead. I keep working on my technique. I have a lot of shots that I've been working on. So yeah, it's about a process of getting better and being really prepared for the coming challenges. So, like, what is your schedule like in a day? What all things you do daily? Like, if you can take us through your Um, insider, like in your life. I mean, it really depends on what part of the season it is. Like right now, I've been working on my fitness because I was a little sick for a month. I had typhoid twice, so I've been working on my fitness more. I've begun my batting sessions as well. So it's about building up slowly so that I'm ready for Syed Mustaq Ali. So it actually depends on what part of the season it is. So right now, I've been working on that. Correct. And what are those particular? I mean, if you would be comfortable to share, what would be some of the fitness drills and in nets? What are some of the drills which you do on a daily basis, which you can share it with some youngsters who look up to you? I mean, it is about uh, improving on what level you are. I feel fitness is something which can carry on forever. So you always have that thing of getting better. Similar is batting. So you need to understand what your body is, what your game is, and what are the things you need to work on. So I find out those things. I
look at my past performances. I understand what are the things I need to work on as a batter, as a fielder, or on my fitness. Wherever I'm lacking, I try and make sure that I improve on those things. So it's about understanding oneself and then focusing on getting better. So we are lucky that we've got some amazing support staff here at NCA who've been helping us improve. Like right now, I've been working on my fitness and my skills. So it's just about getting better every single day. Abhimanyu, I mean, you are already knocking the door of Indian team through your Yeah, performances. You are already yeah, playing for India. You have played for India yes. under 23. So tell us Hmm. about your that experience. Like how was that experience? I mean, being part of the test team was really a great moment because that is the dream. It felt like I was a step closer to fulfilling my dream for playing for the country. I've played for the under 23 India team or the India A team I've captained in the last tour. But I mean, just being part of the Indian test team was really special. There were a lot of learnings, great experiences, some amazing cricket I could watch. I could spend time with one of the best players in the world, and it was really good. I had an amazing time and can't wait to get back into the team and make my debut soon. Take us through some specific moments of yours. The which आपने कौन से players के साथ आपका अच्छा interaction हुआ या ऐसी कोई particular चीजें memories जो आपको याद हो इंडिया के दौरान. इंडिया ए में हम लोगों ने बेस्ट मेमोरीज वही हैं कि हम लोगों ने काफ़ी ओवरसीज टूर्स किए हैं। न्यूजीलैंड हम लोग गए हैं, साउथ अफ्रीका गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, वेस्ट इंडीज़ गए हैं। तो उन कंडीशंस में खेलना और उनका जो भी कल्चर रहता है वो सब समझना तो बहुत एक्साइटिंग टाइम था और बहुत मज़ा आया उसमें। और इंडियन टीम में इंटरैक्शंस मेरे पुजारा से काफ़ी हुए हैं, विराट भी ऐसे हुए हैं। तो वो बहुत मतलब बहुत अच्छे से उन लोगों ने समझाया, तो सीखने को मिला बहुत कि उन लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं गेम के लिए या फिर ओवरसीज़ जब टूर रहता है, तो पुजी भाई का अलग तरीका है तैयार होने का, विराट भी का अलग तरीका है। तो वही समझना था कि अपना तरीका ढूँढना है बट वो लोग क्या करते हैं, क्या पता उनमें से कोई चीज़ मेरे को हेल्प करे, उनका माइंडसेट क्या रहता है। तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और आपके सेम एज ग्रुप में आपने कोई any teammates you became friends with over the time from India? नहीं, काफ़ी लोग हैं ऐसा। मेरे इंडिया में बहुत अच्छा ग्रुप है हम लोग का, हम लोग काफ़ी सारे अच्छे दोस्त हैं। तो एक को नेम करना बहुत मुश्किल है बट ऐसे हैं कि काफ़ी साल से हम लोग इंडिया के लोग साथ खेलते आ रहे हैं। जैसे प्रियांक पांचाल, उनके साथ मैं काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ। केएस भरत के साथ में काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ। नवदीप सैनी हो गए, सौरभ कुमार। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके साथ हम लोग काफ़ी इंडिया टूर्स कर चुके हैं। सरफराज खान, उनके साथ भी काफ़ी टूर्स किए हैं। तो बहुत मज़ा आता है। सब लोग अलग कैरेक्टर्स हैं। अब एक दूसरे को समझते हैं हम लोग, तो अच्छा रहता है ड्रेसिंग रूम का माहौल। कोई कोई एक दो इंसिडेंट तो शेयर कर दीजिए. आई एम श्योर आप लोग को एकदम वो सब मस्तीखोर तो सब रहेंगे. कोई प्रैंक या हाँ कोई जी। ऐसे मेमोरेबल इंसिडेंट्स कोई आपको याद हो ड्रेसिंग रूम या नहीं, आउटसाइड ड्रेसिंग रूम. नहीं, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हो सकते हैं, बहुत हुए हैं बट यहाँ पे अभी मैं बता नहीं सकता हूँ। बट बहुत मजा आता है ड्रेसिंग रूम में, काफी फन करते हैं सब लोग लड़के। और एकदम ग्राउंड के अंदर बाहर सब जगह माहौल बहुत अच्छा रहता है, बहुत मजा आता है इंडिया के लिए खेलने में। चलिए आप ये तो बता सकते हैं कि ऑन ग्राउंड कोई आपको जब आप ओवरसीज टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे थे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया हाँ what जी। any sledging incidents or any particular on ground incidents which you remember? वो वो बहुत नॉर्मल है, हो जाता है वो सब स्लेजिंग वगैरह। आप क्योंकि जब आप वो पैशन रहता है, आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो वो बहुत नॉर्मल चीज़ है और वो आप पहले सोच के नहीं जाते हैं। तो ग्राउंड पे ऐसे इंसिडेंट होते हैं और नॉर्मल चीज़ है बट वही है कि कैसे आप अपने काम पे भी ध्यान लगा सकते हैं वो सब चीज़ होने के बावजूद। तो ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी हुए हैं, साउथ अफ्रीका में भी हुआ था। अभी इंग्लैंड जब हमारे यहाँ इंडिया आई थी खेलने तो उनसे भी काफ़ी हुआ था, क्योंकि वो आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग अपने देश को, तो कुछ ना बहुत एक बैटल की तरह ही रहता है वो। तो उसमें स्लेजिंग वगैरह काफ़ी नॉर्मल है। एक एक तो बता दीजिए कोई लाइक इन डिटेल जो आपको लगे सबसे कम ए, कंट्रोवर्शियल है वो बता दीजिए. नहीं, ऐसा ही एक इंसिडेंट था। इंग्लैंड के एक प्लेयर थे, नाम नहीं बोलूंगा मैं, तो इंग्लैंड ए के कैप्टन भी थे वो उस टूर पे। तो थोड़ा उनका एज ज़्यादा था हम लोगों से, तो हम लोगों ने ऐसे ही उनसे पूछा था कि बॉलिंग उन्होंने किया, उनको विकेट नहीं मिला और पहले मैच में दोनों इनिंग में आउट भी हो गए थे। तो जब सेकंड इनिंग में बैटिंग करना है तो वही पूछा गया कि आप एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं या एज अ बॉलर। तो और एक टीममेट ने बोला ये तो शायद एज अ कैप्टन ही खेल रहा है। तो उस पे काफ़ी फिर लड़ाई हो गई थी उस बात पे।
ये ये तो रही चलो इंडिया ए और इंडिया 23 की बात है, बट you have played हाँ a long time for Bengal, so हाँ take जी। us through that also. How has been your experience representing Bengal, the players you interact with? I mean, it's always been a great honor to represent Bengal. It's got its own culture और बहुत ही ज़बरदस्त स्टेट है। बहुत मज़ा आता है बंगाल के लिए खेलने के लिए। और सीनियर प्लेयर्स वहाँ पे भी जब मैं जूनियर आया था टीम में तो बहुत सारे सीनियर्स थे। जैसे कि मनोज तिवारी हो गए, इन लोगों से मैंने बहुत बैटिंग के बारे में सीखा। रिद्धिमान साहा, मोहम्मद शामी, तो इन लोगों से मैंने काफ़ी सीखा है बैटिंग के बारे में। और वही कोशिश करता हूँ कि जितना हम लोग आपस में इंटरैक्ट करें, ऐसे अभी काफ़ी जूनियर्स भी आते हैं, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ, किसी भी तरीके से उनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये कल्चर बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आता है बंगाल के लिए खेलने में, बहुत प्राइड फील होती है क्योंकि इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा है बंगाल कुछ सालों से। और बहुत हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग लास्ट 3 साल में 2 बार रणजी फाइनल्स खेले हैं, तो होपफुली वो रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली और विजय हज़ारे ये ट्रॉफी जल्दी जीते हैं। Okay. आपको did you get a chance to interact with Dada anytime? Yeah, I've interacted with him a few times. He was the president of our association at one point. He used to come watch games in Ranji Trophy or Mustaq Ali, whatever tournament it is. So I've had a few interactions with Any him. He's particular been really both. कन्वर्जेशन या टिप्स, जैसे दादा या कोई बड़े प्लेयर्स नहीं की जो आपको याद रह गई हो, नहीं, वेदर इट्स विराट कोहली सौरभ और सर का चेतेश्वर सौरभ पुजारा सर और का गांगुली, किसी का भी कोई एक सबने पर्टिकुलर एडवाइस आपको दिमाग में अभी भी याद हो? एडवाइस सबकी याद है मुझे काफ़ी सारी, क्योंकि मैं ये चीज़ें याद करता हूँ, लिख के रखता हूँ अपने पास। तो दादा सौरभ सर का तो यही है कि वो हमेशा जब भी मिलते हैं हमेशा मोटिवेट करते हैं कि और अच्छा करना है और अच्छा करना है, और हमेशा वो कॉन्फिडेंस देते हैं मेरे को। और बाकी विराट भाई से बैटिंग के बारे में मेरी काफ़ी बात हुई थी, वो इंटरेक्शन बहुत अच्छा था कि वो कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने आप को और उनका माइंडसेट कैसा रहता है। स्पेशली उनसे एक इंटरेक्शन हुआ था कि फॉर्मेट्स चेंज बहुत जल्दी होते हैं। जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वनडे सीरीज़ है, अगली टी20, अगली टेस्ट, और उसके 2 दिन बाद ही टी20 फिर खेल रहे हैं। तो वो चेंज ऑफ माइंडसेट वो कैसे लाते हैं, तो वो सब चीज़ सीखने को बहुत मिला, क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वही करते हैं और जितना आगे खेलेंगे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती चली जाएगी। तो बहुत अच्छे इंटरेक्शंस रहे मेरे। अमेजिंग। और रणजी ट्रॉफी में इफ आई हैव टू आस्क यू, आपके कोई 5 पसंदीदा परफॉर्मेंस अब तक, आई मीन ऑब्वियसली यू हैव स्कोर्ड अ लॉट, बट स्टिल हाँ 5 जी। टॉप मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस। टॉप 5, ओके। ऐसे ऑर्डर में नहीं बोल सकता हूँ, बट मैं बोलता हूँ एक हम लोग का दिल्ली के अगेंस्ट मैच था, ग्रुप का सेकंड लास्ट मैच था और हम लोग का आउटराइट जीतना था। और हमको 323 चेज करने थे लास्ट इनिंग में, फोर्थ इनिंग्स में। और मतलब अगर वो नहीं जीते हम लोग क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। तो वो मैच डू और डाई मैच था, तो उसमें मैंने 183 नॉट आउट बनाए थे दिल्ली के अगेंस्ट, और हमने काफ़ी पहले ही टी के थोड़ी देर बाद ही वो टारगेट चेज कर लिया था। और ईडन गार्डन्स पे था जहाँ मुझे बहुत मज़ा आता है खेलने में। तो वो एक बहुत मेमोरेबल नॉक था मेरे लिए। फिर एक कितना मारा था आपने? क्वार्टर फाइ मैंने 183 नॉट आउट बनाए थे उस मैच में, 323 चेज़ कर रहे थे। और एक मैच था उड़ीसा के साथ, वो हम लोग टर्निंग ट्रैक पे खेले थे, कल्याणी बोल के एक जगह है बंगाल में। तो वहाँ पे काफ़ी लो स्कोरिंग हुआ था, हाईएस्ट स्कोर 140 था पूरे मैच में टोटल टीम का, 140, 100, फिर हमने 130 बनाए और फिर उड़ीसा 37 में ऑल आउट हुआ। तो उस मैच में मैंने दोनों इनिंग में रन्स बनाए थे, एक में 88 और एक में 39। तो 100 नहीं था, बट वो बहुत स्पेशल था क्योंकि बहुत चैलेंजिंग विकेट था। और एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे लगता है कि मैं माइंडसेट की वजह से ही कुछ चेंजेस लाया था, तो तभी हो पाया। शायद अगर वो 2 साल पहले मैच तो शायद मैं नहीं परफॉर्म कर पाता। तो वो सेटिस्फेक्शन बहुत थी कि ऐसे विकेट पे रन कैसे बनाने, मैंने उसकी तैयारी की थी और वैसा ही कुछ हुआ। तो वो करेक्ट। नॉक खेल के भी बहुत मज़ा आया। और एक क्वार्टर फाइनल मैच था हमारा गुजरात के अगेंस्ट, तो उसमें मैंने दोनों इनिंग में 100 बनाया था। और फर्स्ट इनिंग में हम लोग 40 में 4 थे, तो वहां से टीम को आगे ले जाना और इनिंग्स लीड दिलाना, फिर हम लोग मैच जीते। तो अमेजिंग। वो काफ़ी सेटिस्फाइंग नॉक था। ऐसे काफ़ी सारे नॉक्स रहे हैं। पंजाब के अगेंस्ट पंजाब में जाके मैंने 100 बनाया था, हरभजन सिंह उस मैच में खेल रहे थे मेरे अगेंस्ट। तो वो एक स्पेशल एक्सपीरियंस था उनके अगेंस्ट खेलना। और अवे मैच में वैसे भी आप लोग को कंडीशंस अपने जैसे नहीं मिलते हैं। तो एक वो नॉक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कहूँगा मैं। और बंगाल के लिए और एक नॉक, और मेरा फर्स्ट 100 ऑब्वियसली रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु के अगेंस्ट मैंने 150 नॉट आउट बनाए थे। तो वो भी काफ़ी स्पेशल रहे, क्योंकि फर्स्ट 100 हमेशा एक स्पेशल वैल्यू रखता है, क्योंकि एक करेक्ट। अपनी जगह आप बनाते हैं टीम में।
पूरे फर्स्ट क्लास सर्किट में पता लगता है कि हाँ कोई प्लेयर आया है जिसने 100 बनाया है, तो वो भी काफी एक स्पेशल चीज थी मेरे लिए। आपका रणजी में कैरियर हाईएस्ट स्कोर इज मेरा 201 अगेंस्ट पंजाब, वाज अगेंस्ट पंजाब. नॉट आउट, 201 नॉट आउट, हाँ जी। If you रणजी can में take us through 201। that match. वो भी एक हमारे लिए नॉकआउट मैच ही था एक तरीके से, बट हम लोग फर्स्ट इनिंग्स में कोलैप्स कर गए थे, हम लोग 180 पे ऑल आउट हो गए थे। फिर पंजाब ने हमारे अगेंस्ट 450 रन बनाए थे, और हम लोग को पता था कि हम लोग काफ़ी पीछे हैं मैच में। बट उस मैच में फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग लंबा खेलते हैं जितना हो सके, और फिर कुछ टारगेट सेट करके उनको ऑल आउट करने जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ऑल आउट नहीं कर पाए, बट हमने 170-80 रन का टारगेट उनको सेट कर दिया था। हमने भी 450 रन बनाए थे, जिसमें मैंने 201 नॉट आउट बनाए थे। वो मैच भी स्पेशल था क्योंकि उनका बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छा था, और युवराज सिंह भी खेल रहे थे उस मैच में। तो सेकंड थर्ड इनिंग में जाके 400 रन की फील्डिंग करने के बाद 450 रन की ओपनिंग करके 200 बनाना, तो बहुत अच्छा लगा था उस Difficult. मैच में भी खेल के। हाँ जी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा. आई मीन ऑब्वियसली हाँ जी। एवरी सक्सेसफुल क्रिकेटर यही एडवाइस देता है, हार्ड वर्क करो, प्रोसेस पे फोकस करो, विच आई हाँ एम जी। श्योर अभी आप भी बोलोगे, मैं आपको पूछूंगा तो. बट एनी स्पेसिफिक advice or tips you would want to give to young batters which they can when they will see this interview, like वो आई पर्टिकुलर फील चीज जिस हार्ड पे वर्क एंड फोकस ऑल इज, करना. हार्ड वर्क वगैरह सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरे हिसाब से अपने गेम को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सब डिफरेंट प्लेयर्स हैं, ये अंडरस्टैंड करना कि अगर एक कोच के अंडर हम लोग 15 प्लेयर भी आते हैं तो सबका खेलने का तरीका अलग है, सबका रन बनाने का तरीका अलग है। और वो समझना बहुत ज़रूरी है एज ए प्लेयर, क्योंकि तभी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। सब एक जैसा नहीं बन सकते हैं, बट आपके अंदर कुछ कुछ क्वालिटीज़ हैं जो किसी में भी नहीं है, उसको और अच्छा करना है। और जो एरियाज हैं आपके जहाँ पे आप उतना अच्छा नहीं है, उसको कैसे अच्छा करना है वो समझना ज़रूरी है। तो अपना गेम समझना, अपनी बॉडी समझना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। मेहनत सब कर रहे हैं, वो तो कोई भी फील्ड में आप जाएंगे मेहनत तो आप करेंगे ही, बट अगर आप अपना गेम समझ सकते हैं तो आप हर कंडीशन के हिसाब से अपना प्लान बना सकते हैं, और सक्सेसफुल आप कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल पाएंगे। तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा एंड यू कैन ठीक गिव है। क्विक आंसर्स टू दैट. That would be a ओके। quick fire. Your favorite cricketing shot, कवर ड्राइव। your cricketing idols. I have three, so it'll be Rahul Dravid for the way he played his cricket. He was very patient, persistent. I really enjoyed his batting. Saurav Ganguly for his shrewdness, I would say, and the way he led India for so many years. And Virat Kohli, obviously, he's been a role model because the way about fitness, he's brought about a big change, and the hunger for runs. So I think these three will be my idols. Your most uh, favorite dressing room teammate. I would pick three. It will be Abhishek Raman and Ritik Rao Chaudhary, who play for Bengal. And there's another guy called Lucky Chaudhary. I've played club cricket with him, so really had a great time with these guys. Two contemporaries of you in domestic cricket who you feel are quality batters. Priyank Panchal, and there's one guy called Ron Kunumal who's coming up. I think he's a really good batter. Two bowlers at domestic level you feel are quality bowlers. One guy called Akashdeep. He's not played for India. I feel he's a really good quality bowler. He's a fast bowler. Uh, yeah, he's a fast bowler. Yeah. And if I had to pick another bowler, there's this guy coming up from Karnataka, Kavirappa. He's also a good bowler. He's not played for India, but he's a really good bowler. Okay. Your favorite IPL team. I don't have a favorite IPL team, but somehow I feel KKR. My mom supports, so sometimes I feel KKR is a good team because she loves Shah Rukh Khan. Any bowlers at international level you want to face in the coming future? I mean, I'd like to face a lot of guys. I'd like to face everyone if I want to play for India. Yeah. But I mean, it'll be a good challenge to face Pat Cummins. Favorite brand of English willow or the brand preferred bat which you use? I've been playing for SS for a really long time, and I think they are probably the best in the business. That's what I feel. The bats are amazing, and I think it gives me a lot of confidence going into a game with those quality bats. So SS has been really good. Your first 100
came on which ground and in which year? It was 2014-15 season. It came against Tamil Nadu at Eden Gardens. Do you remember your last six which you smashed was? It was in the Irani Trophy game against Madhya Pradesh, and I hit a six to Saranjan over deep mid wicket, wide The long on biggest probably. the biggest six अब तक आपने कहाँ पे और कभी मारा था? Biggest six. There's a ground called Jadavpur University in Calcutta. So I was playing a club game there, और वहां पे एक लाल बिल्डिंग है, उसके ऊपर गई थी बॉल, तो शायद मेरे हिसाब से वही सबसे लंबा सिक्स मारा मैंने आज तक. अच्छा. Few batters at domestic level you feel are quality players. There are a lot of quality players who are playing domestic cricket right now, but if I had to pick two, it would be Priyank Panchal. I feel he's a really quality batsman and he scored a lot of runs in first class cricket. Really enjoy batting with him. And there's another guy who's coming from Bengal. He's just played 2 seasons now. His name is Sudeep Karami. So I'm sure he'll play some really good cricket, and I hope he wins a lot of games for Bengal and for India too. Your favorite test batters till now? Favorite test batters? Yeah. I'd to begin with Rahul Dravid. Loved the way he batted. Again, there are so many, it's difficult to pick, but if I had to pick from now, it would be Virat Kohli. And your favorite T20 players? Favorite T20 players? I loved watching AB de Villiers bat, and um, right now Shubman's doing really well, so I really enjoy the way he bats. Five, three or five particular tips you would like to give to improve grassroots cricket, the club and the And stuff. I feel it's pretty difficult because at grassroots level there's a lot of complication. But I mean, if the associations, obviously, if they have their own academies where they can work with junior kids on their technique, on their temperament, on their skills, on their fitness. So I mean, it will be really good because I think the foundation is laid at that level only, and I think that's all. And obviously, like I'm lucky to play for Bengal because Bengal has a really good culture of cricket, and they have a lot of tournaments even for age group cricket under 14, under 16. So I mean, if we can have such tournaments at big grounds and some what can I say? I think Yeah. on big grounds would be really important. Two last questions. We want your Mm. dream 11. One dream 11, you need to pick only those players who have not yet played for India. All format dream 11. And one dream 11, you pick Not. from your favorite players. I'll just pick a dream 11 of the players who've played for India, no? Fine. Like what format do you want me to pick? The kind of 11 which you would like in who can play all the three formats, like all formats. ठीक है, बोलता हूँ मैं, देखते हैं. टीम ठीक ठाक है, अच्छा ही बना है. So my openers will be Virender Sehwag and Matthew Hayden. And And number 3 would मुझे be अंदर से gut feeling that you will say Sehwag. Sehwag. Yeah. I really enjoyed his batting. So Sehwag and Matthew Hayden will be my openers. Number 3 will be Viv Richards. Number 4 will be Sachin Tendulkar. Number 5 will be Virat Kohli. Number 6 will be MS Dhoni. Number 7 will be Shane Warne for me. Number 8, Muthaiya Muralidharan. And my 3 fast bowlers will be Dale Steyn, Glenn McGrath, and Jasprit Bumrah. But yeah, right. Because I feel it's difficult to pick an all-format team. So Yeah. Virat Kohli is number 5, but that's the best I think of right now. Favorite batting position I love to open the innings. to open the innings. And your favorite go-to meals after playing cricket. My favorite go-to meals, anything home cooked. I love when my mom cooks for me, and like I don't get it very often. I hardly get to go home, but I really enjoy eating at home. Any particular habits or discipline you follow in cricket? Like, are there any specific things while you go to the ground or when you go to the nets?
I mean, obviously there are a lot of routines everybody has just to get into the nets. I try and make sure I prepare for a net session like a match only. So beginning from my warm-ups to the things I do before I go into a match. So I try and make sure I do all those things before I bat in the nets. So it's like getting ready for a game. So I always want to be in that game mode, mostly because we hardly get practice sessions because we are playing so much cricket during the season. So I think that is really important for me to be switched on from ball one. Amazing, Abhimanyu. I think this interview was really great, and thank Yeah, you for giving your time. You are a kind you're of most welcome. player who deserves all the recognition. I mean, the kind of Yeah, records and the kind of statistics you have. Players like you yeah. should get that recognition, and I wish you that you get all the things which you are aiming for. Thank And you so once much. again, I will It say was a thank you for pleasure giving your being here. time. Yeah, Most and welcome. take care, buddy. We'll keep in touch. Take care, take care. And Thank you. Thank you. Thank you. yes.